Assalamu alaikum and hello to all cricket viewers and welcome to Cricketing Mind. Today I have a very special guest with me from India, Mr. Venkat. Venkat, welcome to my show. Thank you so much. Thank you so much. Glad to be here. He's also a cricket geek and I have been following him since last couple of months from Instagram, and I will request my all the viewers to please subscribe and also view his Instagram quizzes and stories that's named as Cricket Quizzes. You can easily get that. Venkat, agenda is pretty simple. We will talk about Asia Cup, which is be held on late August, that is 27th of August, and the first match will follow to 11th of September. Then we will discuss about a big match, Pakistan versus India, जो कि दोनों देशों की धड़कन का होता है और मैच का इंतजार होता है. बड़ा लिमिटेड हो गया है, पहले सीरीज हुआ करती थी काफी, लेकिन अब ड्यू टू सम पॉलिटिकल कंडीशंस पे हम कुछ कर नहीं सकते. लेकिन जब भी मैच होता है तो बहुत मजे का मैच होता है. तो वर्ल्ड कप के बाद पहली दफा पाकिस्तान इंडिया जुड़ेंगे, देखते हैं इनकी क्या इस पे सोच है. उसके बाद थोड़ी सी हम बात करेंगे इंग्लैंड वर्सेस इंडिया की जो सीरीज चल रही है, दैट विल बी डिसाइडर, और लास्ट ओडीआई खेला जाएगा. दोनों टीमें 1-1 से बराबर हैं. अब देखते हैं डिसाइडर किसके नाम रहता है. तो थोड़ी सी उन पे गपशप लेंगे वन क्लास से कि उस पे उनका क्या फीडबैक है, और थोड़ी सी बात विराट कोहली पे भी करेंगे कि बड़ा प्लेयर, बड़ा नाम और फॉर्म एकदम डाउन होना, और सारे प्लेयर्स की उनकी विशेष काफी ज्यादा उनके साथ हैं. उम्मीद है कि एक अच्छा मोमेंटम उनको मिलेगा और जल्दी वापस आएंगे. तो इन सारी बातों को कलेक्शन में समराइज करने के लिए विदाउट वेस्टिंग टाइम बात स्टार्ट करते हैं एशिया कप से. सो ब्रदर, क्या आप समझते हो कि एशिया कप 5 बड़ी टीमें पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, उनके साथ 2 क्वालिफाइंग टीम जाएंगी, और हो रहा है कि श्रीलंका में. श्रीलंका की भी कंडीशंस कुछ पॉलिटिकल इतनी अच्छी नहीं चल रही, लेकिन टिल डेट अभी यही है कि श्रीलंका में खेला जाएगा. तो आप समझते हो कि श्रीलंकन कंडीशंस और डेफिनेटली ऑल एशियन टीम्स, टीम कंपोजिशन वाइज और ओवरऑल कौन सी टीम आपको बैलेंस लग रही है, और किसका परला ज्यादा आप देख रहे हो एशिया कप जीतने के लिए? यार, I'll तो डेफिनेटली से कि श्रीलंका का ही चांस सबसे ज्यादा है, बिकॉज वन थिंग इज उन लोगों ने अपना होम कंडीशंस इतना यूनिक बना के रखा है कि इट इज getting absolutely very difficult for any team to come go there and perform. Even like India ने एक different team भेजा था under Rahul Dravid when Ravi Shastri was our coach. Even with the likes of Ishan Kishan, Ruturaj Gaikwad, these guys are excellent spin players. Okay, इन लोग इतना स्ट्रांग होने के बावजूद वहां का जो टर्न मिल रहा था, that was something else only. तो वहां पे, and given how Australia is losing by an innings, we just saw Australia lose by an innings, so that definitely Sri Lanka would be the favorites for me. And given currently ना, एक मेरे को सबसे ज्यादा डर एक ऐसे टीम से लगता है जो डू और डाई सिचुएशन में होता है, कि जिसका हारने के लिए कुछ बचा नहीं है, या उन लोग फिर ये मैच के नजरिए से देख ही नहीं रहे. Like which was actually what was the main thing India Pakistan matches के जो होता था कि भाई गेम क्या भाड़ा, भाई खेलना है, हारना नहीं है. वो एंगल, वो अलग ही एक आइडिया होता था. अब ये चीज श्रीलंका पे करंटली ऐसा है कि they are not playing for the game, they are playing for people. बिल्कुल. This game is the only distraction the country is having, with the only reason to smile when the Sri Lanka wins. लेकिन थोड़ा सा आपकी बात यहाँ मैं इंटरप्ट करूंगा. रेड बॉल क्रिकेट और व्हाइट बॉल क्रिकेट में थोड़ा फर्क नहीं होगा. श्रीलंका टेस्ट में हमने देखा पाकिस्तान भी आया तो पाकिस्तान को हराया गया, और अपने होम ग्राउंड पे स्पेशली वो बहुत खतरनाक टीम है. लेकिन थोड़ा सा अगर हम देखें महिला के बाद, संगाकारा के बाद, जितने बड़े नाम थे, मुरली के बाद वास्ट एकदम डाउनफॉल आया, और हमने कहा श्रीलंका को बिलो पार कर दिया कि बिल्कुल भी उनका कोई जो एक स्पार्क था वो हमें देखने को मिला. लेकिन अब आजकल हम देख रहे हैं कि वो चीज नजर आ रही जो लंकन टाइगर्स में मशहूर थी, और आहिस्ता आहिस्ता कोई एक इंडिविजुअल ऐसी परफॉर्मेंस देता है जिसमें पूरी टीम खड़ी हो जाती है. आपकी बात से मैं जरूर एग्री करूंगा 110%, और आपको सेकंड भी करूंगा. लेकिन क्या एग्री करेंगे इस बात से कि रेड बॉल और व्हाइट बॉल बिट डिफरेंट गेम, और T20 का ये एशिया कप खेला जा रहा है तो दैट वुड बी अ डिफरेंट बॉल गेम? डेफिनेटली काफी डिफरेंट है, बट ना अभी द रीजन आई बैक श्रीलंका फॉर व्हाइट बॉल क्रिकेट आल्सो बिकॉज ना उन लोग के बहुत सारे नए प्लेयर्स हैं. महेश तीक्षणा, मतीशा पतिराना, वेरी यंग गाय, बट जयसूर्या मतलब विल बी वेरी अर्ली स्टेजेस, बट समवन लाइक धनंजय डिसिल्वा, or you take the currently Wanindu Hasaranga, these guys now they have got match winners a lot, and with this they have some experience with Dimuth and here and there when they get in people. So ये इसके साथ मतलब मेरा only श्रीलंका के साथ एक ही प्रॉब्लम है कि will they have someone to control if there is a flurry of wickets falling, if the opening order collapses suddenly. I don't see a anchor there. Like previously it was Dilshan, there was Sangha, there was Mahela, there was many people, there was even Angelo Matthews used to hold on, but currently वो एक anchor role दिख रहा है. They have full of match winners, but
कहीं गड़बड़ हो गया तो कौन रोकेगा वो पता नहीं वहां से, वो मेरा बड़ा डाउट है श्रीलंका तो फेवरेट्स के लिए आप श्रीलंका के साथ ही जा रहे हैं अभी, कीपिंग ऑल टीम्स इन माइंड? करंटली यस, करंटली मतलब फेवरेट्स लाइक इंडिया बोलूंगा ऑफ कोर्स, मेरे इंडिया के लिए तो सपोर्ट है मेरा, बट बाकी जो रहेगा वो तो अभी देखेंगे क्या होगा. पाकिस्तान इज ऑल्सो वन ऑफ द फेवरेट्स, बट पाकिस्तान का द ओनली नॉट वरी पर से, बट द क्वेश्चन दैट आई हैव इज will Pakistan who are the current good spinners, because given how spin friendly the tracks are currently there, I see only great pace bowlers coming from Pakistan, but I don't see spinners will the be likes lacking of what Abdul Qadir, from the land of Abdul Qadir, I don't see a good spinner coming in. That is my only worry. Perfect. So T20 is definitely a few hours game, 4 to 5 hours we get a result. So वेंकट इस बारे में क्या कहेंगे कि अब श्रीलंका तो ठीक है, होम कंडीशंस भी होंगे, एडवांटेज भी होंगे, यू आर अ वेरी लाइक वैलिड पॉइंट आपने रेज किया कि दे प्ले फॉर द पीपल, जो उनकी इस टाइम नीड भी है, और एक येलो हुई टीम नजर आ रही है, यूनाइटेड टीम नजर आ रही है. एंड डेफिनेटली बीइंग एन इंडियन, यू आर सपोर्टिंग इंडियन, बीइंग अ पाकिस्तानी आई विल ट्राई कि पाकिस्तान विल बी गुड, बट डेफिनेटली वी विल सी दैट हाउ इट गोस. बट व्हाट अबाउट अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश ऑन द डे? वो टीमें भी बड़ी इन दो को डिस्कस करूंगा, क्वालिफायर को करने की जरूरत नहीं है. अफगानिस्तान भी ऑन पर्टिकुलर डे और बांग्लादेश भी, हमने देखा है कि बांग्लादेश अभी वेस्ट इंडीज में भी काफी थोड़ा अच्छा खेल रही है, जो करंट अभी सीरीज चल रही है. ओडीआईज में उन्होंने बड़ा शेप अप किया अपने आप को, टेस्ट तो बड़ा खराब किया. तो उन पे थोड़ी सी फीडबैक लूंगा, अफगानिस्तान एंड वेस्ट इंडीज पे, बट टू लाइनर्स कि आप उनकी टीमों को कितना रेट करते हैं, क्या इतनी अहलियत है, पोटेंशियल है कि फाइनल तक जा सकते हैं, या किसी एक आध अपसेट हम देख सकते हैं? बांग्लादेश वुड बी लाइक these two teams को ना आप कितना भी एनालाइज कर दो, इट्स लाइक every time I think about something and they exceed my expectations. You never know ये दो टीम क्या कर देगा, because out of nowhere, तो out of nowhere some guy will suddenly take a hat trick, some guy will set up and like they have some big names with Tamim Iqbal, Liton Das and all, they are doing very good. और अफगानिस्तान का तो क्या ही बोले, आप राशिद खान है, मोहम्मद नबी है, तो उधर मतलब आप they have a very good spin department, they have a very good spin department. मुजीब है, राशिद खान है, नबी है, ये 12 ओवर तो T20 में ये निकाल लेंगे इनके. और रहा बात even for some like रहमानुल्लाह गुरबाज, like these guys are, if they get going they can take away the match within a few overs. Suddenly you will be looking at 6 over 70, 6 over 80 and then you're like okay, then you are in more defensive, you cannot attack to get the wickets after that. So बहुत tricky team है ये. Okay, Mangal, let's move to yeah, please. Yes. Let's move to second action item agenda. Big match Pakistan versus India to be scheduled on 28th of August. इस पे तो कोई डिबेट भी हमारी होगी, क्योंकि वर्ल्ड कप के दिनों में मैंने जाफर खान एक इंडिया से उनसे काफी लिया था और बड़ा हमारा मजे का सेशन हुआ था, फ्रेंडली वे में चलता है. बाकी जो हाइप तो क्रिएट होती है, बड़े बड़े सितारे भी बोलते हैं, शोएब अख्तर हरभजन का भी थोड़ा हमने देखा फ्रेंडली वे में. तो क्या देखते हैं अब वर्ल्ड कप के? हिस्ट्री वॉज हिस्ट्री, डेफिनेटली इंडिया ने बहुत दफा हमें पछाड़ा है, सीधी बात है. वर्ल्ड कप में हम एक दफा जीते हैं किस्मत से पहली बार. अब जो एशिया कप आ रहा है इसमें भी हमारा कोई ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान का भी इतना कोई अच्छा नहीं है. इंडिया काफी दफा चैंपियन बना, बंगाल से पाकिस्तान 2 दफा जीता है, एक 2000 में और एक 2012 में आई गेस. तो क्या कहते हैं करंट टीम को देखते हुए, फॉर्मेट को देखते हुए, पाकिस्तान इंडिया को लेकर अगर चलें तो कहां पे खामियां नजर आ रही हैं जो दोनों टीमों को ओवरकम करना है, या किस पे किसका पल्ला थोड़ा भारी हो सकता है? कीपिंग, पास्ट रिकॉर्ड्स भी, और रिसेंटली जो दोनों टीमें दुबई में मिली थी. देखो करंटली ऑन पेपर में भी इंडियन व्यूअर से मेरे को बहुत गाली पड़ेगी, बट इंडिया करंटली इज अ बिट शेकी. अ लॉट ऑफ कैप्टेंसी, लाइक रोहित शर्मा इज गोइंग डैम गुड कैप्टन, बट इज नॉट गेटिंग इनफ चांसेस टू कैप्टन. उसका इंजरी कंसर्न ज्यादा रहा है. विराट कोहली डेफिनेटली is going through a bad patch as per his standards. If you look at his numbers, maybe you will not like, if you take out the name and look at his stats, okay ठीक है, इतना भी कुछ खराब नहीं खेल रहा बंदा. If it was someone else, good, you're scoring 50s, you're scoring 20s and 30s, every 30 का दे रहा है, great. But just because it's Virat Kohli, even the criticism from people is like, oh इतना देर हो गया सेंचुरी मारे. Expectations are damn high. Damn high. The only concern for me is we have a lot of floaters. I don't see maybe a Surya Kumar Yadav who is good enough, who can settle and control innings. Apart from him, I see only hitters, very damn good stroke players. That's where Virat Kohli becomes very important. We need him to be at his best. Like we know कि बाकी players stroke play करते करते wicket फेंक भी दे, विराट कोहली नहीं फेंकते था. एक time था like इंडिया का, even if रोहित and धवन and everyone and धोनी and these guys used to come and शीट एंकर रोल लेके चलते थे और 50 ओवर तक खेलते थे. बिल्कुल सही है.
Or he used to strike, his strike rate was not 170, 180, but not under 130 also. Well, But currently, both is getting a problem. Now, like we saw the England-India series, maybe like I'm overlapping on a bit of topics of yours. But what we saw recently, Dhawan and Rohit are great stroke players. They saw the initial ball, it was swinging through. But jaise hi unka wicket gira, Pant threw away his wicket, Pandya went for an unnecessary shot. It was not like the required rate was over 8 or 9. Just because the bowler is building a pressure, you cannot just release with the 6. He threw away his wicket. Shami away mein chal raha tha. Surya Kumar Yadav was completely tied up. He scored some 20 runs, 1 6 and a single one boundary. Baaki sab singles mein chal raha tha. Like these players, they're all great stroke players, but I don't see a guy who jab aisa difficult pitch milega who will rotate, which was MS and Kohli used to do. Like कुछ भी single नहीं छूटना चाहिए. MS used to do here and there घुमाता था भाई. That is a big problem for India. I also remember you're a big fan of Chennai Super King. I believe आपकी एक वीडियो देखी थी मैंने IPL की और MS का आप जिक्र ना करें हो नहीं सकता. तो मैं खुद भी महेंद्र सिंह धोनी का बड़ा कूल कैप्टन रहा है और बड़ा अच्छा उसने इंडिया को लेके चले. डेफिनेटली बड़ा नाम. अच्छा एक चीज आपसे रोहित शर्मा की आपने बात की. वेरी गुड कैप्टन. मुंबई इंडियंस के 5 टाइटल उनके पास हैं और इंडिया की टीम में देखा आई पर्सनली रेट हिम मोर देन कोहली एज फार एज कैप्टनसी इज कंसर्न. लेकिन जो रोहित का एक इशू आ रहा है कि लेफ्ट आर्मर के आगे वो टेक्निकल फ्लॉ हमें सबको पकड़ लिया, चाहे आमिर हो, चाहे शाहीन हो, चाहे बोल्ट हो. अभी रिसेंट देखा विली ने भी उनको पकड़ा या टोपले थे जो भी थे, वो उस चीज पे काम नहीं कर पा रहे. थोड़ा सा इस पे आपका क्या है? कोई टेक्निकल फॉल्ट, कोई कोच, इतने प्रोफेशनल माशाल्लाह वो हैं, मेरा नहीं ख्याल किसी कोच की जरूरत होगी जो इस तरह की चीज को बताए कि जो गेंद पड़ के अंदर आ रहा है वो उसको रीड नहीं कर पाते और गेंद टांगों पे लगता है. एलबी तो इसका क्या रोहित शर्मा के साथ क्या ये प्रॉब्लम है? ये पाकिस्तान में बहुत व्यूअर्स ने मुझसे भी पूछा. मैं जब इंडियन लोगों के साथ जुड़ता हूं तो वो भी पूछते हैं, मतलब इतना बड़ा प्लेयर 264 ओडीआई का हाईएस्ट और उसके बाद भी इतनी सी चीज एक समझ नहीं आ रही कि वो इस पे क्यों नहीं वर्कआउट कर पा रहे. देखो यार इसका मेरे मतलब टेक्निकली जवाब तो किसी के पास नहीं है. लाइक दे आर टेक्निकली ग्रेट, बट ना रोहित शर्मा जैसा कैरेक्टर ना, लाइक द मोर आई लुक एट हिम एज अ प्लेयर, इट रिमाइंड्स मी ऑफ समवन लाइक अ वीरेंद्र सहवाग और समवन लाइक अ शोएब अख्तर फॉर दैट मैटर एज अ कैरेक्टर. इन लोग टेक्निक पे ज्यादा नहीं जाते, इन लोग का एक एबिलिटी है, वो अपना करेंगे. लाइक देयर वाज अ स्टोरी ऑफ Muthaiya Muralidharan was bowling and Sehwag and Dravid was batting. So Dravid came to, he was batting a lot, he was observed Murali and everything. Then he came to Sehwag and said, देख यार ये अभी इधर ना ऑफ पे डालेगा, ऑफ में अवॉइड करना, लेग में ट्राई कर. तो उसको पूरा गाइड किया कि ये इसका बॉल ऐसा टर्न हो सकता है एंड दिस एंड दैट. उसने बॉल डाला, मुरली ने भाई ने कवर्स के ऊपर दिया सिक्सर. लाइक दे डोंट केयर अबाउट दिस टेक्निक्स. उनको वो टाइम पे जो दिख रहा है, लाइक इफ रोहित लाइक अगर वो कवर ड्राइव मार गया तो चल गया. वी टॉक सो मच अबाउट हिज पुल शॉट, इतने बार वो उधर कैच आउट हो जाता है. लाइक बट ही स्टिल बैक्स इन. Like if he feels he's able to hit, I don't think Rohit Sharma will ever doubt his technique. If he feels he'll go for it or miss or as a bowler. Like in this case, I'll have to give credit to Bait Amir, Bait Topley or Bait Shaheen. Great bowlers. Like he's not getting out to some, you know, like at this point I just give credit to good bowlers. He beat even Trent Bolt. These guys are not small names. They're damn good. Yeah. Okay. विराट कोहली पे हमने ऑलरेडी थोड़ी सी बात कर ली है. बस 2-3 स्टेटमेंट्स लूंगा कि जिस तरह बड़ा नाम है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं. वही आपकी वाली बात कि कोई और प्लेयर होता तो हमें इतना ज्यादा जान हमारा ना होता, लेकिन कोहली है तो 50, 70, 80 तो नॉर्मल सी चीजें होती हैं और एवरेज के लिहाज से. तो क्या एक चीज आपको लग रही है कि कोहली बेसिकली करें तो शायद फॉर्म वापस आ जाए, मोमेंटम वापस आ जाए? वो क्या चीज आपको लग रही है? स्टार्टिंग देखी बड़े डिलाइटफुल शॉट नजर आते हैं, 3 चौके लास्ट मैच भी लगाए, मिडल ऑफ द बैट नजर आ रहा था, लग रहा था कि आज कोहली का दिन होगा, लेकिन आउट ऑफ नेवर वो गेंद पड़ता है और वो भी विकेट गंवा बैठते हैं. तो उस पे क्या कहेंगे? विराट कोहली को क्या करना चाहिए कि जो विराट कोहली हम देखना चाहते हैं? विराट कोहली को सबसे पहले बाबर आजम का ट्वीट देखना चाहिए कि जो बाबर आजम ने ट्वीट किया, भाई वो वही है, रिलैक्स. And I think like there are two viewpoints that is coming a lot in the cricketing world. One is people are asking him to, hey, you go take a rest, a good rest. But I don't know, like, and like before going that, but other viewpoint is go and play domestic. Some people are saying he just needs to score a lot of runs, get in that touch, maybe score 100 in domestic match or a county game. Anywhere, just go and score some runs, that is. But like coming on the first topic, I had a stat where people were talking about maybe he should rest a bit. Like since 2021 World Cup,
एक 3-match T20 series was New Zealand, he was rested. One test versus New Zealand, he was rested. 2 tests versus South Africa, he was not there. 3 T20 versus West Indies, he did not play. एक 3-match T20 versus Sri Lanka, 5-match T20 versus South Africa. एक single ODI versus England and 3-match ODI versus West Indies, 5-match T20 series versus West Indies. दुनिया भर का रेस्ट हो गया. I'm talking about after 2021 World Cup. So like I don't see the idea कि रेस्ट देके क्या ही मिला उसको. बिल्कुल. He's supremely fit. It's not like he's tired or anything. He's a supremely fit athlete. I think he needs when he's not playing, go for a county game, maybe play for some team. I think every county team would be happy to have Virat Kohli in their lineup. That's true. Any day, anytime. They will give any money to play. That is okay. That's true. Then we have to just get some runs, go and smash some bowlers, get in the groove. I think that is more. Okay, Venkat, coming back to the last point of agenda item for today's, and that was basically India versus England series. We like tied right now, and we have a decider on Super Sunday, and hopefully may the best team win, being a neutral. But I would like to see that Asian team to win India, to be honest. What your thoughts on that? First match, India totally dominated. Then comes England. A domination, not that much domination, that hardly put under 250. Then India played not that much good innings. Under 150 they got out and lost by 100 runs. So decider, both teams are like even Steven right now. So how do you go as a final, and will be Kohli part of third ODI? I think he should be, because if you are removing Kohli based on that performance, then you should drop the Rohit Sharma and Rishabh Pant first. I mean, who performed on that part? Like, he out of all batsmen, don't you think there will be unfair with Huda? Great guy, I have seen following you. It's a great future prospect. Like future prospect currently, see, like Rohit Sharma said, I'm like, tomorrow, like if we are seeing it unfair on Huda based on 3-4 games, imagine how unfair it will be for Virat Kohli, who scored 10,000 runs almost. That guy is like, it's so difficult. And when you look at him, like you said, when he hit the first, he hit it on the off straight, maybe a slightly off boundary, then it hit it on the onside, then there was a glorious cover drive. And there was a tweet from Harbhajan, there was a tweet from Sehwag, there was a tweet of Azharuddin, like today looks like Kohli day. Everyone felt the same. He looks in supreme touch. But then suddenly, I don't know why he nicks that outside off ball. I don't know what is he thinking. He does that. That's all. Huda will definitely come, but I think from an Indian perspective, they are looking at Huda from more of a T20 perspective, not an ODI. They'll probably not look at him that way. There are, like in the future, like teams would have something like a Shaw, Gaikwad opening, maybe a Shaw, Gaikwad or Ishan opening. Shaw's Gill in the middle order with Huda coming in. He will be more like a future replacement for, say, someone like a Jadeja. Jadeja is almost 33, 34. A couple more years he'll be there. So things are like that way. But Virat Kohli will be there, at least in ODI and tests. What about Sky? Again, a very good youngster for India, playing like a lot of games in IPL we have seen, then followed by the Indian ODI T20s. He has already cemented his place. Do you think that it's still early to say, or he will be a great find for India already? I think he's a very late find for India. That guy should have come into the team a long time ago. Man, like I cannot believe the sheer audacity to step. He pulls from front foot. Yeah. From an Indian fan, Indian batsmen always pull from the back foot. They go move back and then they pull. He's a guy who pulls from front foot. He scores above wicketkeeper's head, and at the same time, when he slaps back, he has a huge range. Like, he should have been given a chance long ago. He's a very late find. Currently, he's nearing 30. So it's better. Like, I think they should nurture him more from a ODI and a T20 perspective, and not test. Okay, final thought. India or England series? Who's gonna win? England. So not England, India. That was a blooper. Slip of a tongue. Okay, pleasure talking to you, Venkat. It's a nice time, and we will keep in touch. Hopefully, keep promoting your channel as well. Hopefully, we will follow more sessions in the coming days. Yes. And thanks for coming once again. We will stay in touch. Till then, take care. Allah Hafiz. Bye. Thank you.